Assalamualaikum. Welcome to ELT Streaming. This is Fawzia Said. My question is that if you are a student or a teacher or in general public, you are asked to present before people, what would you feel? अगर आपको ये कहा जाए आप एक स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप घर पे हैं और आपको कहा जाए दैट यू हैव टू स्पीक बिफोर पीपल, what would be your reaction? क्या आपका रिएक्शन होगा? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और आपकी फिजियोलॉजिकली आप क्या फील करेंगे? सो मोस्टली people become anxious and they are reluctant to present before people or to say something before people or a group of people before live audiences. So it is said that communication works for those who work for it. So you have to work on your communication if you are going to present before live audiences. First of all, this is called public speaking. If you are going to deliver a speech or a presentation or you are going to deliver a lecture on a topic before live audience, it is called public speaking. Public speaking क्या है? जब आप एक मजमे के सामने किसी भी टॉपिक पे बोलते हैं तो वो पब्लिक स्पीकिंग है. So today's video is about some ways or tips to improve your public speaking skills. Either you are a teacher or a student or working in an office, or you want to start your business or anything, and you have to interact with the public, or you are going to say something before live audiences. So these tips would help you out to become more confident and say what you want to deliver in a more effective manner. The first step is to prepare, practice, and be normal. Mostly people feel physiological reactions when facing public, like pounding heart and trembling. So do not take these things onto your nerves. Think that you are normal. उन चीजों को आप normal लें. The best way to overcome anxiety is to prepare beforehand. If you have to deliver a speech or you are going to share your views before live audiences, you have to prepare yourself and then prepare in both ways. That prepare mentally that you are going to say something before live audience and prepare your content or material. Then practice. Practice makes a man perfect. तो प्रैक्टिस आप करें कि मैंने जाके बोलना है. अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, फिर प्रैक्टिस करें. Take your time, and once you have become comfortable with your material, what you are going to present, and you have all the things what you are going to do on the stage, get a friend or colleague or a small group of people and present before them. Record yourself, and if they are saying you some points, make them into your presentation and improve your material and practice more and more for better delivery of your material. तो उसको आपने नॉर्मल लेना है. अपने कोलीग के सामने या अपने स्टूडेंट्स आपके हैं या आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं उनके सामने आप रिहर्सल करें और उसमें जो एडिशन होगा उसको मॉडिफाई करें और फिर आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और कॉन्फिडेंट होंगे अपनी स्पीच को या अपने लेक्चर को डिलीवर करने में. नो योर ऑडियंस. First of all, you have to understand who your audience is and what they are interested in. So you can tailor your content, your material as per their requirement and engagement. ठीक है? For example, you are going to present a topic before a group of teacher. ठीक है? जो आपकी observation कहलाती है after योर इंटरव्यू. मोस्टली स्कूल्स में ऑब्जर्वेशन लेते हैं टीचर्स की. तो अगर आप वो देने जा रहे हैं
तो आप नर्वस हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा पहले तो ये कि मैं टॉपिक कौन सा लूँ, फिर टॉपिक डिसाइड हो गया तो आपको ये समझ नहीं आ रही कि 3 या 4 सीनियर टीचर्स होंगी तो मैं कैसे वहां पे डिलीवर करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये हो कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, फिर आपका टॉपिक क्या है, और आप उस ऑडियंस को कैसे एंगेज करके अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु योर ऑडियंस इज। आप अपने स्टूडेंट्स के आगे डिलीवर करने जा रहे हैं, या आप अपने कोलीग्स के आगे कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या आप एचओडी हैं और आप अपने सबऑर्डिनेट्स के आगे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने क्लास फेलोज के सामने प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या आप रिसर्चर हैं और आप एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपको अब देखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस क्या है, कौन सी है, और आपने उसके मुताबिक अपने आप मटेरियल को और अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। This is the third tip, that you have to organize your material. And first of all, you have to create the framework or the outline um, of your topic. Write down the topic and create an outline. What is the general purpose? What are the specific purposes? Central idea या theme क्या है? Main points आपने उसके point wise आप उसको बना लें. Make sure to grab audience attention in first 30 seconds. Gauge your audience carefully and take their reaction and adjust your message as per their need and be flexible. आपने अपना ऑर्गेनाइज कर लिया मटेरियल बिफोर हैंड, अब आप स्टेज पर जब डिलीवर कर रहे हैं तो आपको पॉइंट्स पता हैं, लेकिन आप अपने ऑडियंस का रिएक्शन देख के आप उसमें कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, कोई ह्यूमरस चीज़ को इंटरेस्टिंग वाकया उसमें ऐड कर रहे हैं एज पर देयर नीड, उनके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए और उनके अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो आपके पास जब पॉइंट्स होंगे तो आप उसको स्मार्टली बीच में एडजस्ट करके अपने मटेरियल को रीऑर्गेनाइज करके डिलीवर कर देंगे। वर्क ऑन योर डिलीवरी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू द वे यू डिलीवर अ मैसेज। That is very important when you are speaking in public. Cut out your fillers. आप अपने fillers आपने इसको minimize कर दें, which might distract your audience attention. Avoid memorizing the material or content. So if you memorize the material and you forget anything, so that will disconnect you from the path and you will be more anxious and this will lose your confidence as well, और आप उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपने अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है इन अ वे दैट you have to handle those points and you have to speak slowly, not too fast, not too slow. ठीक है, and keep this thing in your mind that your words are heard by the audience in more effective manner. Include occasional pauses to give audience a moment to think what you have said. Maintain correct tone of your voice as per your message. तो आपने अपने डिलीवरी पे ये वाली चीज़ें का ध्यान रखना है कि फिलर्स ज़्यादा यूज़ ना हो, अपनी टोन मेंटेन करनी है, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना, बहुत तेज़ भी नहीं बोलना। तो ये वाली सारी चीज़ें आपने देखनी है, पॉजेस बीच में रखने हैं ताकि उन ऑडियंस को ये मौका मिले कि वो ये रिकॉल कर सकें कि आप क्या कह रहे हैं। यूज इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज। सो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू आर ऑन द स्टेज एंड यू आर delivering your speech or presentation. Maintain a relaxed upright gesture. आपने एक रिलैक्स अपराइट जेस्चर रखना है। डू नॉट स्विंग ऑन द स्टेज। मेक आई कॉन्टेक्ट एंड यूज जेस्चर्स नेचुरली दैट एनहेंस योर मैसेज। ठीक है, अपने जेस्चर्स को आपने नेचुरल रखना है। ये नहीं करना कि आप वहां पे हैं तो आप पजल हो रहे हैं तो हाथ ज्यादा हिलाना शुरू कर दें, आंखें अपनी जो है झपकना शुरू कर दें। मैच योर फेशियल एक्सप्रेशन एंड ओवरऑल एनर्जी टू द मैसेज एंड दैट डेवलप अ गुड रिलेशन विद योर audiences and they take interest in you, what you are saying. Now, the sixth point is to grab your audience attention.
if you are in think that you are in a hall and a person is presenting something, do you enjoy hearing the first sentence that like I am going to talk about this or I am going to present on this? क्या आप कैसा फील करेंगे अगर एक जगह पे आप बैठे हुए हैं और एक बंदा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है? तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है एंड यूज अ स्टार्टलिंग statistics or a catchy statement or a strong statement when you are going to start your presentation. You can ask questions as well, and you have to use the vocabulary and metaphor in a way that your audience can relate टू योर मैसेज. ठीक है, आपने ऐसी एग्जांपल्स देनी है, आपने मेटाफर्स ऐसे रखने हैं, वोकेबलरी ऐसी यूज करनी है कि आपके ऑडियंस उसको समझ सकें और उनकी इंटेंशन जो है वो बरकरार रहे और उनका इंटरेस्ट डेवलप हो. मेक योर प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग. So you can make your presentation interesting to deliver your message more effectively. You can inject a funny anecdote in your presentation, and you will add some, you can say, life experience. Audiences generally like a personal touch in a speech, and that will give you a strong impact if you add some personal experience or a humorous event in your presentation. लेकिन ये आपने उसके अकॉर्डिंग करना है. अगर आप किसी सीरियस टॉपिक पे दे रहे हैं तो आप उसको ऐसे रिलेट करेंगे कि वो ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप हो. ये नहीं आपने करना कि वहां पे आप लतीफ़ा डाल दें. तो ये अब आपने देख के अपने टॉपिक के मुताबिक, अपने ऑडियंस के मुताबिक इसको इंटरेस्ट डेवलप करना है. डू नॉट रीड. मोस्टली पीपल रीड फ्रॉम द स्क्रिप्ट और स्लाइड जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं. दैट विल फ्रैक्चर द interpersonal connection, that will break down the interpersonal connection between the person and the audience. By maintaining eye contact with the audience, you keep the focus on yourself and on your message as well. So you have a brief outline and you have to keep the points into your mind और फिर आप उसके अकॉर्डिंग चलें. रीडिंग नहीं आपने करनी. ठीक है, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उस पर आप खुद भी फोकस रहेंगे और आपके ऑडियंस का फोकस आप पे रहेगा एंड उनका इंटरेस्ट डेवलप रहेगा और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. यूज ऑडियो विजुअल एड्स वाइजली. सो टू मेनी ऑडियो विजुअल एड्स स्पॉइल द कनेक्शन between you and your audience. Use those audio visual aids where necessary to enhance or clarify your content. वहां पे यूज करें जहां पे आप समझें कि इसको यूज करने की जरूरत है. जैसे आप कोई बीच में स्टोरी दिखा रहे हैं या कोई आप क्लिप डाल रहे हैं तो वो तब डालें, या कोई डाटा ऐसा दिखा रहे हैं जहां पे उसकी जरूरत हो. अननेसेसरी डिटेल्स और अननेसेसरी चीजें आप बीच में मत डालें. use audio visual aids in a wise manner so they capture your audience attention. उनकी अटेंशन बरकरार है. ये ना हो कि आप ज्यादा ऐसी चीजें डाल लें तो वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए. तो एप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड्स बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, वो डालनी है आपने. ठीक है, नाउ you have to close with a dynamic end. Always conclude your speech or presentation with a summary or a strong statement that your audience is sure to remember. हमेशा आपने ऐसी चीज के साथ एंडिंग करनी है कि वो लाइफ लॉन्ग लास्टिंग उनके दिमाग पे असर रहे और वो उसको याद रखें कि आपने क्या मैसेज डिलीवर किया है. So improving public speaking skills take time and practice, but with consistent effort and the right techniques, you can become a confident and effective public speaker. Hope these tips would help you out in delivering your speech or presentation or lecture before the live audiences. I'm waiting for your comments. Write down the feedback or the next topic you want the video, on which you want the video. Keep watching ELT Streaming. Take care of yourself and my channel as well. Thank you.